वक्त पीक पे था, उस वक्त ये डिबेट की जा रही थी कि जो कोविड-19 का जो वायरस है, वो वायरस जो है कुछ साइंटिस्ट, कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते थे इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द बैट्स फ्रॉम द चाइना, कुछ ये कहते थे कि ये चाइना मेड है, कुछ ये कहते हैं किसी टाइप ऑफ वेपन, एक किस्म का वेपन चाइना प्रोड्यूस किया है। बट अगर हम HIV की बात करें तो साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका जो जब ये रिपोर्ट किया गया था चिंपैंजी से, अफ्रीकन कंट्री से, चिंपैंजी से फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया इसको, और इट इज बीइंग कॉल्ड एज साइलेंट इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, SIV. When it is being reported, it is being said that the virus has first time reported from the chimpanzee, from the African region, and this was present in the form of SIV, silent immunodeficiency virus. But with the passage of time, since we know that viruses have the capability to get mutated, mutate होते हैं, उनकी जो genetic material है, particularly जब हम DNA और RNA की बात करते हैं, उसमें capability होती है, किसी characteristic features होती है, it gets mutated. और ये SIV जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि अफ्रीकन कंटिनेंट में जो लोग वहाँ के थे वो चिंपैंजी का शिकार करते थे, उसका मीट खाते थे, और हो सकता है ये थ्योरीज दी जा रही है कि जो SIV जो म्यूटेट हुआ, इट गेट्स ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बीइंग इन द अफ्रीकन कंटिनेंट, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट स्प्रेड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट गेट्स म्यूटेटेड इनटू HIV, जिसको हम आज कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. If you look at the history, the first patient, as I already told you, it has been reported from the USA, Los Angeles, 1981, 5 जून को रिपोर्ट किया गया पहला पेशेंट USA से. और जब उसको सिम्टम्स उसके जो डेवलप हुए, जब उसने सिम्टम्स देखे थे HIV के, तो साइंटिस्ट परेशान हो गए कि ये क्या है, बिकॉज़ दिस इज न्यू डिजीज and they are having the sarcoma type of cancer, kaposit एक किस्म का, that is called as skin cancer. उसके सिम्टम्स जो थे उसमें थे. When the scientists, when they studied this type of disease, they came to know that it is a new type of disease, it is a new type of viral infection, and they called it HIV infection and AIDS. उन्होंने कहा कि AIDS है. And finally, हम अपने इंडिया की बात करते हैं. इंडिया में हमारे कंट्री में जो है 1986 में पहला पेशेंट रिपोर्ट किया गया. That was from the prostitute of Chennai, 1986 में सबसे पहला पेशेंट जो है that being reported from the Chennai prostitute से. और आफ्टर दैट इट गेट्स स्प्रेड. चल रहा था ये रिपोर्टिंग जो है बाद में हुई, और ये कहा जाता है देयर आर सर्टेन थ्योरीज आल्सो कि जो HIV था, क्योंकि 1981 में रिपोर्ट किया गया लॉस एंजलिस से, USA से, उससे पहले हमारे पास थ्योरीज हैं, साइंटिस्ट के 1949 1956 में जो था इट इज बीइंग प्रेजेंट, इट इज बीइंग देयर, बट इट इज नॉट बीइंग रिपोर्टेड, एंड फाइनली इट वाज रिपोर्ट 1981 एंड इन आवर कंट्री 1986. नाउ होता क्या बेसिकली, एड्स क्या है? एड्स इज नॉट ए डिजीज. जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, बाकी डिजीजेस की बात करते हैं, जो हमें सिम्टम्स उसके रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, या फिर कोविड-19 आपने देखा जो नॉर्मली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है. एड्स इज नॉट ए डिजीज इटसेल्फ. एड्स इज बेसिकली a condition which invites the other opportunistic infection to our body. It weakens the immune system of our body. Since we know that, being a student of life science or biology or science, हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है. That defense mechanism is present in the form of white blood cells, जो हमारे सिस्टम को एक इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. That act as a barrier in our body. That defense mechanism act as a soldier in our body. जो because we are always exposed to the outside environment. We are always exposed to the different types of microorganisms. और उसमें से हमें पता नहीं कितने सारे पैथोजेनिक, बट हम कभी बीमार नहीं पड़ते. जब एक्सट्रीम केस होते हैं उसको हमें इलनेस होती है. So this is the defense mechanism which prevents the infection in our body, and it is called as immune system. This immune system basically क्या करता है, HIV क्या काम करता है, immunodeficiency virus, ये हमारे बॉडी में जो white blood cells हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म, जो सोल्जर्स हैं, उनको किल कर देता है, उनको वीक कर देता है. और जब वही सोल्जर्स मर के हमारी बॉडी में अल्टीमेटली कोई भी छोटी सी छोटी अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन जो हमें हो सकती है. So that is why AIDS itself is not called a disease. It is basically a condition which develops, which invites the other opportunistic infection in our body. So this we can say that जो है AIDS जो है क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि AIDS और HIV में क्या डिफरेंस है.
is the difference between HIV and AIDS? A person who is infected with HIV, can we call it as AIDS patient? No, sir. We can call him or her HIV infected. A person which is having AIDS, because AIDS it is full-blown symptoms. It is the final stage of infection of HIV when a person is being infected. So we have categorized this into 3 types. अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन होती है HIV की, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड. स्टेज फर्स्ट में जो सपोज किसी इंसान को इन्फेक्शन होती है HIV की, जब वो इंटर होता है उसकी बॉडी में, तो उसमें क्या होता है नॉर्मली कि उसको फ्लू टाइप सिम्पटम्स अपीयर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इम्यून सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो वो फ्लू जो सिम्टम्स जो है उसमें वो काफी देर तक रहते हैं और वो अल्टीमेटली दे गेट्स डिसअपीयर. पर उस स्टेज में वो पर्सन जो है ट्रांसमिट नहीं कर सकता HIV को दूसरे पर्सन को. दूसरी स्टेज में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोनिक स्टेज ऑफ क्लिनिकल लेटेंसी पीरियड. उस पीरियड में क्या होता है कि जब इंसान इन्फेक्टेड पर्सन जो है HIV को दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल स्टेज. एंड इट मे बी आफ्टर 2 years 3 years 10 साल के बाद भी हो सकता है. उस पर्सन के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है स्टेज पे है, किस एज पे उसके डिपेंड करता है. थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड एज एड्स. व्हेन द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन इज कंप्लीटली वीकेंड, उस वक्त हम कह सकते हैं द पर्सन इज हैविंग द फुल ब्लोन सिम्पटम्स ऑफ द एड्स. एड्स के अपने कोई सिम्पटम्स नहीं है, फीवर, फैटीग, आपको उसको हेडेक होना या बाकी जो है रैशेस, swollen lymph nodes, ये बाकी डिजीजेस से भी होती है, बाकी इन्फेक्शन से भी होती है. So it is not having its own infection. Particular symptoms नहीं है इसके. Particular symptoms हम कह सकते हैं कि जब suppose एक person हमारे पास is being infected with HIV person जो है he or she can remain with HIV virus. अगर उसको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी की एंटी मेडिसिन दी जाती है, वो इंसान जो है 10 साल 20 साल जो है अपना लाइफ स्पैन गुजार सकता है. But if the person is not being treated with the medicine within time, उसको किसी को जो है उसका वो symptoms जो है उसको जल्दी डेवलप हो सकते हैं. So this is how that is the difference between the HIV as well as AIDS. Now here comes the another question. कैसे हमारी बॉडी में HIV इंसर्ट होता है? कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ा भी, आप लोग जानते भी हैं कि HIV का जो है अभी तक we are not having the vaccine available. We are not having the still a permanent treatment available for treating the patients that are being infected with the HIV disease. So there, of course, we are having the medication, we are having the antiretroviral therapies available with us, but still a permanent solution is not there. So कैसे हमारी बॉडी में ये इंटर होता है, that is इसको थोड़ा उस पे हम देखते हैं. Since we know that हमारी नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का, तो हमारा DNA होता है, उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वो रेप्लिकेट होता है, ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में, आरएनए में ट्रांसलेट करकर प्रोटीन्स बनाता है जिसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, जिसका नेचुरल देना. HIV का जो वायरस होता है इट इज आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. इसमें एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. दैट इज व्हाई दे आर बीइंग कैप्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ रेट्रोवायरसेस, बिकॉज़ दैट एंजाइम हैज द कैपेबिलिटी to convert the DNA into RNA, RNA into DNA. That is why there is no still specific vaccines or medications available for the treatment of this disease. So ये वायरस जो है अपना जिस वक्त जैसे इंटर होता है, इंटर अभी मैं बताऊं कि इंटर कैसे होता है बॉडी में. ये जैसे इंटर हमारी बॉडी, इंसान की बॉडी इंटर होता है कि ये हमारे DNA के साथ अब उसको मैच करता है, उसको रीड करता है, और जो DNA जो है वहां पे अपने आप को इंसर्ट करता है, DNA में इंसर्ट कर देता है. और उधर किसी बात हमारा DNA मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब हमारा DNA मल्टीप्लाई कर रहा है उसके साथ अपनी कॉपीज भी प्रोड्यूस कर रहा है. इट इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन कॉपीज. एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, अपने नंबर बढ़ाता जा रहा है, हमें कोई पता नहीं चल रहा. ऑफ कोर्स फ्लू नॉर्मल सिम्पटम्स, दिस इज नॉर्मल सिम्पटम, शिवरिंग, फीवर, these are the normal symptoms and a person normally faces day to day life, right? So जब ये मल्टीप्लाई करता है, as a result of this it make a number of copies of themselves in the body. अब मुझे बताइए, जब क्योंकि नॉर्मल वे में क्या होता है कि हमारी जो जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन हमारे डीएनए की जाएगी वैसी प्रोटीन्स बनेगी, लेकिन जब वो मैसेज को पूरा रीड कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो प्रोटीन्स कौन सी बनेगी? प्रोटीन्स वही बना रहा है. जब वो प्रोटीन्स को बना रहा है तो अल्टीमेटली it affects the T helper cells in our body. T helper cells में receptor sites होते हैं.
CD4 receptor sites, CD4 cells हमारी बॉडी में होते हैं, जो उनको कहते हैं आओ यार हमारे पास, उनको इनवाइट करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं उस डीएनए। As a result of this, it repeats multiplying और हमारे इम्यून सिस्टम जो भी कैपेसिटी जाता है जब डिक्रीज होता है हमारा इम्यून सिस्टम, अल्टीमेटली छोटी सी छोटी इन्फेक्शन 10 पार्टिकल भी आ जाए वी कैन इन्फेक्ट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैंसरस कंडीशन ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज्यादा डेवलप होती है। वायरल की छोटी छोटी इन्फेक्शन आपको इन्फेक्ट कर सकती है। Because what is there? Finally, we are here. It is because of the immune system. I am standing before you. Because I am always exposed to the outside environment, and that environment is not full of only the beneficial microorganisms. That is also full of the pathogenic microorganisms, and that pathogenic microorganisms are being prevented to cause the infection in our body by our immune system. इस तरीके से जो हमारी बॉडी को affect करता है. Now here the question arises: who are the persons which are at the most risk of this disease? Normally it is being said that ये नहीं कह सकते हैं कोई particular specific person, no, कोई specific race, no, कोई specific sex, no. Of course, every person is capable to be get infected by HIV virus. Persons who are having the unprotected sex, persons who are sharing the needles, persons who are gays, bisexual, and persons, particularly the men, and they are doing the sex with the men particularly, they are at the high rate of risk of infection of this HIV disease. And when the symptoms develop, जब symptoms develop होते हैं ऐसे पेशेंट में, नॉर्मली आपको खाने से फ्लू होता है, चील होता है, ऐसे पेशेंट का शोर जो है शोर हो जाता है, थ्रोट जो शोर हो जाता है, मसल इचिंग हो जाते हैं, नाइट स्वेटिंग हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ रैशेस ऑन द बॉडी हो जाती है, swollen lymph nodes हो जाते हैं, मौत जो उसका शोर हो जाता है, these are the normal symptoms. But अगर tuberculosis mycobacterium tuberculosis infection उसमें हो जाएगी, ultimately that affects the respiratory tract. अगर उसमें cancerous disease हो जाएगी, that can affect any part of the body of our system. That will be the blood cancer, it will be the bone cancer. Because what is it? जब हमारा एक किस्म का immune system है ही, जो हमारा जो defense mechanism जो था, हमारे जो soldiers थे, उनका नंबर जो है 200 मिलीमीटर पर कम हो गया है हमारी बॉडी में, CD4 सेल्स और T सेल्स का. Ultimately, any type of microorganism, protozoal infection, viral infection, bacterial infection that will be invited, and it causes the disease in your body, and ultimately it results in the death of the patient. So these are the certain, you can see that persons who are at the risk of this infection. How is it being transmitted? That is the question. Normally, हम लोग जानते हैं कि हम लोग पर्सनल बिकॉज डेबिटेबल टॉपिक मोस्टली आप सोशल मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखते हैं, आप पढ़ते भी हैं और हर साल इस पर डिस्कस किया जाता है. तो हमारे कभी कभी क्वेश्चन भी अराइज होते हैं, क्या इट इज बीइंग वेदर इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो. सिंस वी नो दैट मॉस्किटो इज आल्सो रिस्पांसिबल, काफी सारी स्पीशीज हमारे मॉस्किटो की हैं, वी आर हैविंग द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द मॉस्किटो हियर इन इंडिया. जब हम इंडियन कंट्रीनेंट की बात करते हैं तो वी नो दैट क्या मॉस्किटो बाइट से ट्रांसमिट होता है. मलेरिया हो सकता है, डेंगू वायरस हो सकता है, बाकी हो सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो बाइट. एक और क्वेश्चन आपने नॉर्मली पूछा जाता है डिबेट्स में, किसिंग से ट्रांसमिट होता है. नो सर. कुछ यहाँ पे इफ देयर इज अ डीप किसिंग एंड इफ देयर आर द स्क्रैचेस इन द माउथ, बिकॉज़ इफ देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ द ब्लड सैंपल्स, इफ यू आर डूइंग ए किसिंग with the infected person and you are having the scratches in the mouth, if there is a possibility of the transmission. Otherwise, in a normal person, normal HIV infected person, आप उसके साथ खा सकते हो, आप उसके साथ बैठ सकते हो, आप उसके साथ खेल सकते हो. There is no way of transmission of this HIV infected virus from one person to another person. So, how it is being transmitted? It is being transmitted by the blood transfusion. If the infected blood is being transmitted to the patient, it is being transmitted by the semen, fluid, vaginal fluid, breast milk. If the mother is being infected with the HIV, there is a possibility of transmission of this virus to the child, the young one, to the newborn baby, right? So if the mother is pregnant, अगर वो infected है, there is a possibility of that. That the child, the newborn baby may get infection of the HIV. It is being transmitted by the rectal fluids. It is being transmitted by the unprotected sex. You can say that pregnant lady is also responsible for the spreading of. So these are the different means
transmission that can help in the transmission of this virus from one person to another person. So this is how अगर हम इसको protect करें, basically the objective of celebrating of these days are the formulation of these clubs, radical clubs. एक बहुत बड़ा एक इसका मतलब हमारा एक network है पूरे इंडिया में. That is only are solely responsible to educate the people, to educate the young people like you. To educate the masses, to aware the masses at the institutional level, at the village level, at the town level, particularly in those areas which are highly susceptible to HIV infection. So that is the job of, that is the objective of creating these clubs, radical clubs. That is the objective of celebrating these days. That we have to aware the people. So if we look, what is the treatment available? क्या कोई ट्रीटमेंट HIV का स्किल देयर इज नो परफेक्ट सॉल्यूशन. जैसे हमारे पास काफी सारी वैक्सीन हैं, हमारी कंट्री लीड कर रही है और इस साल आपने देखा कोविड-19 में भी हमारी कंट्री ने लीड किया. इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी मेकर्स, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपर्ट्स, इट इज बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ आवर साइंटिस्ट दैट वी आर कैपेबल टू एक्सपोर्ट द वैक्सीन. हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन बनाई, RNA वैक्सीन, एंटीबॉडीज, and we have exported to the different countries free of cost. तो वहाँ पे हमने हमारी कंट्री ने लीड किया. So यहाँ पे जब हम HIV की बात करते हैं, there is no permanent solution as far as HIV is concerned. Of course, there are certain medications are there. That is called as antiretroviral therapies. These are the medicines which are being provided to the person. और उससे क्या हो जाएगा? उससे उसकी एज एनहांसमेंट हो जाएगी. If a person is HIV infected, वो हमारा अपना भाई है. We have not to that basically एक स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में. अगर हमारे पास हमें पता चल जाए कि HIV, इस तरह आपने कोविड में देखा था. मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं. आपने कोविड में देखा जब कोविड स्टार्ट हुआ था, कोविड में आपने देखा था कि अगर किसी घर में कोविड पॉजिटिव होता था तो उस घर से दूरी रखनी, 200 मीटर वहां पे तो जाते ही थे. आपने देखा, we have seen that situation particularly during कोविड में. अगर यहाँ पे अगर किसी को पता चले वो HIV पॉजिटिव होती नहीं है तो उसके साथ कोई हाथ मिलाना पसंद करेगा. But this is not the way कि हम उसमें हाथ मिलाएं. हम खा सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं डेली लाइफ में. This is not उस तरीके से ये HIV वायरस से स्प्रेड. ऑब्जेक्टिव ये है कि उस जो हमारे पास ये बहुत बड़ी कम्युनिटीज हैं, जो भी आपको मैं डाटा शेयर करने वाला हूँ, हमने उनको आइसोलेट नहीं करना. They are brothers, they are sisters, they are our young, they are part of our society. We have to take them, these people with us. That is the objective of celebration of these days. That is the objective of celebration of organization of these clubs. So if you look at the status of AIDS throughout the world, presently we are having 39 million of people which are living with HIV. 39. It is a status of 2022. 2022 का status है. आज शायद क्रैश करो. तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड में, अगर आप देखोगे, it is African countries, African European countries, they are the worst affected countries. और उन countries में भी अगर आप देखोगे, Eswatini, Lesotho, South African country, Nigeria, Congo, these are the affected countries, most affected countries in the region, in the world, which have the high percentage of HIV infected persons. Then, अगर आप इंडिया में देखोगे, we are having 24 lakhs HIV patient. और हमारे इंडिया में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, they are at the top of the graph of that as far as HIV infection is concerned. अगर आप JNK में देखोगे, we are having 6,158. ये जून 2023 का डाटा है. लेकिन जब मैंने डाटा पढ़ा था, उसी के बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था हमारे इसका हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि दिस डाटा इज नॉट, ये जो ऑफिशियल डाटा, लेकिन ऑफिशियल डाटा था ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का. लेकिन बाकी जो एनजीओज हमारी जेएनके में काम कर रही है, इसके साथ जुड़ी हुई, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज, उन्होंने कहा था ये डाटा गलत है, ये डाटा हमारे जेएनके में. और आप लोग जानते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग सच टाइप ऑफ पेशेंट्स. 60,000 पेशेंट इज अ बिग नंबर. सो ये डाटा जो है हमारे पास नहीं है, मतलब उसको आप गरीबी के ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास हो सकता है. तो 1400 डेथ्स अभी तक इसमें हुई हमारे जेएनके में विद एड्स. सो दीज आर द स्टैटिस्टिकल डाटा एंड दिस शोज दैट कि हमारे पास एक बड़ा जंक है पॉपुलेशन का एट द वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल एंड एट आवर कंट्री लेवल. सो कमिंग बैक टू द थीम that let us that the communities lead. Communities कौन सी है, उनको क्या लीड करना है? Before concluding my talk, how the communities lead basically? Communities are the persons
which are dealing with HIV at the present time. It may at a real level, at a state level, or at a global level. So these such persons have to be taken with us. कि अपने साथ लेके चलने इनको लीड करना है. तो इस थीम का जो ऑब्जेक्टिव है इस साल उन्होंने ये फॉर्मुलेट किया कि जो कम्युनिटीज इस साल हैं, they come forward, they have to be act as a leadership to formulate the rules, plans, budget, implementation and monitoring of schemes which are being related to the HIV infected person. उन लोगों को लीड करना है, उनको आगे आना है, प्लान बनाना है, उनको वो बजट बनाना है, कैसे हम अपनी कम्युनिटीज को लीड कराएं. लास्ट ईयर का जो थीम था उसमें ये था कि हम अपने जो है कम्युनिटीज को एक साथ लेके चलें, उन लोगों को एक साथ ले चलें. इस साल जो उन्हीं लोगों में से आगे आए लीडर बने और अपनी उस कम्युनिटीज को, अपने उन लोगों को जो HIV इन्फेक्टेड को साथ लेके चलें. Because they are the people among us. We have not to ignore such type of population. Because this is a great population, great. और आपको मैं एक चीज बताऊं, जो साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज है, the worst affected area, वहाँ पे बहुत ज़्यादा malnutrition है. अगर आप पढ़ोगे malnutrition की वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है. वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है साउथ अफ्रीकन रीजन में which are poor countries. और जब आपका malnutrition होता है तो directly impact the immune system of our body, right? So these communities have shown the leadership role need to be fully supported and remunerated. Besides these, now the barriers जो these आ रही हैं, we must have to support government, NGOs, they come forward, they have to support these communities and they have to make the leaders among them जो उनको लीड करें. सिर्फ उस लीड करने के लिए उनको बजट भी चाहिए, उनको रेम्यूनरेशन भी चाहिए, उनको पैसा भी चाहिए, उनको प्लान्स बनाने हैं, इस तरीके से मैं लीड करें. Before I conclude, we know that मैंने अभी एग्जैक्ट आपको बताया हमारी कंट्री में बहुत कम नंबर है और बहुत कम डेथ्स as compared to the rest of the world. It is because of the fact that we are living in such a country where the religious can be given that most important. और it is because of the fact that कि हमारी जो religious है, चाहे हम किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, whether we belong to Hinduism, Muslim, Jainism, किसी भी रिलीजन को देखो, हमारे रिलीजन में कभी भी ये जो है ऐसी चीज मतलब जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर जो होता है, हमारे रिलीजन में कभी हमारे रिलीजन हमको मना करता है. इसकी वजह से we are still protected by this disease. It is because of the fact that ये fact है कि so that is यहाँ पे before I conclude मैं आपको ये बताऊं कि we must follow our religion. और हमारा religion जो चाहे कुछ भी हमारा धर्म, हमारा religion कभी भी allow नहीं करेगा we have to go for the unprotected sex, we have to go for the you can prostitutes etc. Because these are the places and no religion allows this. किसी कोई religion धर्म allow नहीं करता है. Because they are the places where there is a probability of you can get the infection of HIV. Yes, with this, I would like to thank our principal sir for providing the opportunity and thank you sir. I would like to congratulate the organizing committee, Professor Yunus, convener of the Red Ribbon Club, for being a part of this event and making this event successful, and the team is being associated with him. Thank you sir. Thank you very much. Thank you, Edward, for your brainstorming lecture. I would like to invite our principal, Dr. Pradeep Kumar Sharma, sir, to speak words about the event. Sir, please. Professor Shakil Ahmed Khande, Professor Ijaz, sir, आपका नाम से बताइए. Professor Makbul Palas, Professors Sundar sir, other faculty members, and dear students. First of all, I congratulate Red Ribbon Club for conducting this program. And मेरे को लगता है कि बच्चे जो हैं हमारे साइंस से ही हैं. Yes sir. तो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूँ आपको. Being a student of zoology and professor of zoology, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि no
individual in this world is independent or free, exclusive. वो सोचे कि मैं अकेले रह सकता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है. We have to live in relationship with other organisms या दूसरे इंडिविजुअल के साथ भी हमें एक इंटरेक्शन करनी पड़ती है, तभी हम जी सकते हैं. तो ये इंटरेक्शन जो होती है दो तरह की होती है. एक होती है पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक होती है नेगेटिव इंटरेक्शन. पॉजिटिव इंटरेक्शन होगी जिसमें बेनिफिट होता है एक को या दोनों को, और नेगेटिव इंटरेक्शन होगी जिसमें एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है. दैट्स कॉल्ड एज द पैरासिटिज्म. तो पैरासिटिज्म जो है ये उसी की एक टाइप है. जो हमारा एड्स है इसका एक बैक्टीरिया है जो कि फायदा उठाता है हमारी बॉडी का, और हम क्या कहते हैं डिजीज. ठीक है. तो जो पॉजिटिव इंटरेक्शंस होती हैं वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होती हैं, एक के लिए होती है. जैसे कि प्रोटोकोऑपरेशन आपने पढ़ा होगा. इट इज द एसोसिएशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स in which both are benefited, but there is no physiological link between the two. Physiological link मतलब कि वो अगर उनको अलग भी किया जाएगा इंटरेक्शन से, दोनों इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं. जैसे कि हर्मिट क्रैब और सियानी. अभी कर दिया आया. ठीक है. अगर वो अलग भी रहेंगे तब भी जी सकते हैं, अगर इंटरेक्शन में रहेंगे तो दोनों बेनिफिट होंगे दोनों को. ठीक. एक और होता है कमेंसलिज्म. इसमें क्या होता है, ये थोड़ा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान नहीं होता, नहीं कोई फायदा होता है. लेकिन जैसे कमेंसलिज्म आपने देखा होगा हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बेनिफिटिंग कोलाई होता है, इसी तरह से ओपेलाइना होता है जो कि फ्रॉग इंटेस्टाइन में होता है, वो कमेंसल्स होते हैं. लेकिन उसको बेनिफिट नहीं होता दूसरे बंदे को, लेकिन एक को फायदा होता है उसका. तो एक को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता है कि वो बीमार पड़ जाए. और तीसरा होता है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म जो है ये ऐसी इंटरेक्शन है बिटवीन द टू इंडिविजुअल इन व्हिच बोथ आर बेनिफिटेड एंड देयर इज अ फिजियोलॉजिकल लिंक बिटवीन द टू. दोनों के बीच में फिजियोलॉजिकल लिंक होता है. अगर उनको अलग किया जाए तो जी सकते हैं. तो उसमें जैसे आपका एक लाइकेंस होता है जिसमें एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है. एक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट होता है, जैसे कि हाइड्रा में कुछ क्या कहते हैं एल्गी होते हैं जो कि उसके लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं. ट्राइकोनिम्फा इन द टर्माइट और बिटवीन एनिमल टू एनिमल है. और क्या कहते हैं इसमें, और एक म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें कि ट्राइकोनिम्फा जिसकी वो है टर्माइट्स की, ये बिटवीन एनिमल एंड एनिमल होती है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटरेक्शन जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर नेगेटिव इंटरेक्शन होती है तो उसमें बीमारी हो जाती है. अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन होगी तो कोई भी इंडिविजुअल जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें इंटरेक्शन में रहना पड़ता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ता है. ये जो नेगेटिव इंटरेक्शन होती है जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं जो कि डिजीज काज करते हैं. तो क्योंकि ऐसा हुआ है कि कोई इंडिविजुअल जो है जैसे बैक्टीरिया ही आया या कोई एक इंडिविजुअल दूसरे पे पैरासाइट बन गया, अगर उसने उसको अडॉप्ट कर लिया होस्ट ने तो दोनों को म्यूचुअली रह सकते हैं. अगर नहीं किया अडॉप्ट तो एक क्या कहते हैं नुकसान उठाना पड़ेगा, एक को फायदा होगा. तो वही ये हमारी एड्स की प्रॉब्लम है. एड्स की प्रॉब्लम क्या है, वायरल डिजीज है, इट इज रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस मींस क्या होता है, मतलब रेट्रोवायरस का एक सेंट्रल डॉगमा है हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है. लेकिन ये सब इसको मान देता था कि ये वन वे होता है. ऐसा कहते थे पहले कि वन वे होता है कि डीएनए से हमेशा आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है जो कि फिर आगे एक्सप्रेस होता है, जीन से एक्सप्रेशन भी दिखाता है. लेकिन ये रेट्रोवायरस क्या होता है कि उल्टा कर देता है. इसने सेंट्रल डॉगमा की धज्जियां उड़ा दी हैं कि ये आरएनए से डीएनए बनाता है. एक बार ये ह्यूमन में एंटर हो गया, उसके बाद क्या करता है ये कि अपना जो आरएनए है उसको सेल के अंदर डाल देता है और न्यूक्लियस में पहुंच जाता है और ह्यूमन डीएनए के साथ ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है. और कुछ देर के बाद क्या हो जाता है कि इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द होल ऑफ द सेल. और जो सेल है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है जो कि उसको काम करना है वो भूल जाता है, वो इस वायरस का काम करना शुरू कर देता है और उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है. और एकदम से इतनी कॉपीज बन जाती हैं सेल में कि उसका न्यूक्लियस पूरा भर जाता है और फिर उसके बाद न्यूक्लियस फट जाता है, पूरे उसमें साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और उसके सेल ब्रस्ट कर जाता है और वो रिलीज हो जाते हैं विद इन द बॉडी.
उसके बाद दूसरे सेल को अटैक करते हैं। तो क्योंकि एक ये जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, ये बेसिकली ये किस पे फीड करता है? फीड तो नहीं करता है, लेकिन किसको अटैक करता है? लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आपने सुना होगा ना, उन्हीं को अटैक करता है। और ये हमारा क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तरीके से काम करता है। तो हमारा एक होता है कि बॉडी हमारी इंटैक्ट होती है, इट इज कवर्ड विद स्किन, एक बैरियर का काम करता है। कि बाकी तो हमारे एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से क्या है? बैक्टीरिया, पैथोजेंस पड़े हुए हैं, कुछ बेनिफिशियल हैं, कुछ हार्मफुल हैं। पूरे इसमें हमारे हवा में है, पानी में है, हर जगह होते हैं। आप खाना खा रहे हैं ना, आप कहीं बाहर से खाना लेते हैं, उसके ऊपर भी होते हैं। तो जब तक हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तब तक कुछ नहीं होगा, एंटर नहीं कर सकता। स्किन हमारा ठीक है, एंटर नहीं कर सकता अंदर। हमारी कुछ ओपनिंग्स हैं, स्किन तो हर जगह नहीं हो सकता, हम तो बिल्कुल टोटली ब्लाइंड नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं से हमें खाना है, कहीं से निकालना है। तो जहां जहां ये ओपनिंग्स होती हैं वहां पे क्या होता है? एक और बैरियर दिया गया है, उस सलाइवा होता है, कुछ सिक्रीशन होती है जो कि बैक्टीरिया, पैथोजेंस को किल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसको, इस बैरियर को भी उसने क्या कहते हैं, पास कर लिया, तो फिर हमारे क्या कहते हैं, ह्यूमरल जो है सिस्टम काम करता है। फिर सेल लेवल पे हमारा काम करना शुरू कर देता है। तो अगर इन सभी बैरियर्स को उसने पार कर लिया, इन्फेक्शन हो गया, तो हम बीमार हो जाते हैं। अगर नहीं हुआ तो, अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो बीमारी नहीं होगी, अगर इम्यून सिस्टम हमारा खराब हो गया तो बीमारी हो जाती है। अब ये हम यही क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ही अटैक कर रहा है। उसकी वजह से क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारा जो है, जो हम जिसको बोलते हैं बॉडी सोल्जर्स जो होते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है? ये इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज जो होती हैं, जो भी जिसको भी मौका मिलता है फिर वो बॉडी पे अटैक करता है। और इस एड्स में क्या क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है न्यूमोसिस्टिक निमोनिया होता है, एक रेयर टाइप ऑफ निमोनिया होता है। ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, स्किन के रैशेस बनते हैं, वो इट चेंजेस इनटू द मैलिग्नेंसी, स्किन का कैंसर होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें मैलिग्नेंसी हो जाती है, मतलब कैंसर क्या कहते हैं, प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी सोल्जर जो है, कोई भी इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है और धीरे धीरे आदमी की डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। लेकिन ये जो एड्स है, एड्स एक स्टेट है। एड्स से कोई मरता नहीं, मरता किससे? दूसरी इन्फेक्शन से। इम्यून सिस्टम की वजह से ये मरता नहीं, क्योंकि दूसरी इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक जो डिजीजेज हैं, पैथोजेन जो अटैक करते हैं, उसकी वजह से एड्स में डेथ होती है। और ऐसा नहीं है कि सबकी डेथ होती है, कई सारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनको कुछ भी कोई सिम्टम्स नहीं है, दे एक्ट एज ए कैरियर। ठीक है, अगर वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं उनके, तो दे इन्फेक्ट अदर पीपल। ठीक है, कई लोग देखा गया है कि 20-20 साल से वो इन्फेक्टेड हैं, लेकिन उनमें कोई भी सिम्टम नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो कैरी करते हैं वो। अब कब होगा उनके पास, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में अभी भी पता नहीं कितने साल का, क्योंकि अभी 81 में फर्स्ट पेशेंट आया था, 86 में यहाँ डिटेक्ट हुआ। जब हम MSc कर रहा था तब मैंने पहली बार सुना था। आई वॉज स्टूडेंट ऑफ MSc zoology in 1986 to 88। तो उस टाइम हम सुनते थे कि एड्स के बारे में बड़ा, उस टाइम एक तमाशा हो गया था पूरा कि कुछ हो रहा है। तो अभी तक इसके बारे में हम पता, आज तक हम इसकी कोई दवाई नहीं बना पाए हैं, कोई वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, क्योंकि ये मैंने बताया कि रेट्रोवायरस से चेंज हो, इसमें बहुत सारी म्यूटेशंस हो रही हैं, साथ साथ में हो रही हैं, बड़े टाइप्स बन रहे हैं इसकी। अभी तक कोई दवाई नहीं है, और जो भी दवाई मेडिसिन यूज करते हैं दैट इज इंडिविजुअल डिजीजेज जो होती है ना, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है उसकी दवाई दे रहे हैं। ठीक है, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया की कोई दवाई दे रहे हैं, इंडिविजुअली चीजें दे रहे हैं। बाकी एड्स के लिए कोई दवाई नहीं है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है कि जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने हैं।
थैंक गॉड कि हमारी कंट्री में उस तरह की उस लेवल का वो नहीं हो रहा है। हम सेफ हैं अगर हम सेफ्टी मेजर्स ले लें, जो कि आपको सर ने बताया है। ठीक है, आई एम थैंकफुल टू आवर रेड रिबन क्लब फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, and I am also thankful to Dr. Ejaz for delivering such a nice lecture on this. I think all will be benefited. Thank you very much. जैसे कि आप सभी ने सुना, सर ने इंटरेक्शन के बारे में बहुत कुछ बोला। यही इंटरेक्शन का नतीजा है कि हम सभी यहाँ पे जुड़े रहे। अगर ये इंटरेक्शन नहीं होती तो हम भी यहाँ पे नहीं होते। थैंक यू सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, I would like to honor those participants who yesterday participated in different activities regarding this event. But before that, I would like to thank the judges of different events for poster making. We had 3 judges: Professor Yasin Sahab, HOD Chemistry; Dr. Ravinder Singh, HOD Botany; Dr. Swan Singh, Assistant Professor, Department of Botany. For essay writing, the judges were Dr. Ravinder Singh, Dr. Isha Salatha from Zoology, Dr. Singita Devi from Botany. Now moving forward, it is a time to honor the students who yesterday participated. Now, I would like to invite all the faculty members and sub-principals of stage and facilitate the participants. Sir. आप सभी लोग आए, सर, बशीर सर। For essay writing, the 3rd prize goes to Nikita Devi from semester 1st. Nikita Devi. She is not here? ऑनर भी आप कोई और आ जाओ। ऐसे नहीं चलेगा। Second prize in essay writing goes to Ritika Raj. Absent. नहीं आई? No sir. Honor we have anybody can come. उसके जवाब पर Event is live. Event live है ना आज? The first prize goes to Parth Parihar. It's time to announce the winners of poster making. The 3rd prize in poster making goes to Radhika. The second prize in poster making, Sanjana Devi.
And the first prize in poster making it is none other than Farooq Nihar. Besides that, we have a number of participants. I would like to invite the participant Ajit Sharma to come on the stage and have your certificate. Saif Malik, if he is here. Saif Malik. Sadaf Khan. At last, I would like to request our principal sir, please facilitate our resource person, Dr. Ajaz sir. Thank you all the faculty members and principal sir. Now I would like to invite Surinder sir, HOD Economics for a vote of thanks. Surinder sir, please. Esteemed Principal Sir, Professor Khandi Sir, Professor Pala Sir, Professor Jal Sir, Professor Yunis, Professor Swan, Professor Bashir Sir, Professor Sehbaz, Professor Sangeeta, dear students, very good afternoon. Good afternoon, sir. And as I am here to propose vote of thanks on the occasion when the Republican Club of the College organized this crucial event on HIV/AIDS, as our resource person talked of different aspects regarding how it is spread, what is protein synthesis, Principal Sir explained also, and what is reverse transcription in this process, and what are the ways that we can prevent. As the resource person also talked that how we, given that all we are here, we are having some moral philosophy, we are having spiritual aspects, so we should take care that how we can protect ourselves, taking this spirituality on the priority basis, on day-to-day basis. Because हमें mom, dad ने, हमें teacher ने, हमें हर जगह शिक्षा ही मिलती है कि हम पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को कैसे एडवांस कर सकें. So, on this occasion, I would like to thank the Principal Sir for the technical support for organizing this event, and I would like to also thank the resource person, Dr. Ajaz Sir, for delivering a very wonderful lecture and awaiting and sensitizing us regarding the AIDS. I would like to thank Principal Sir for his address on different aspects of symbiotic, commensalism, etc., etc. And I would like to thank Professor Yunis and his team for organizing this important event
which will serve us, and definitely we will benefit from this event. I would like to thank all the participants, congratulate all the participants who played their role in different events for last 3 days, whether it is essay competition, whether it is poster making, and definitely it adds to your confidence, it adds to your how you display your talents, and this plays a very important role in your life as well. I would like to thank all the participants and thank one and all. Thank you one and all. Thank you. थैंक यू Thank you. थैंक यू रात की कसरने का सर आपने लाइव किया था ये हाँ